Welcome all. This is our lecture 26, and in this lecture we will cover the topic MS Word. MS Word is the basic software which are required to prepare our important documents, our thesis work. All this work is done in the MS Word or any Word application. So let's start our today's topic, MS Word. First of all, we will know what is MS Word. MS Word is used to process our words basically. Words means as you are seeing on your screen, these are the text. Okay, and in MS Word, we will manipulate these words, or these you can say we can alter, we can change these text as well. Is also called like वर्ड प्रोसेसर। इसमें हम लोग वर्ड को प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक जो हमारा टेक्स्ट है, जो मैसेज है, जो हम कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो हमें इजीली यूजर को व्यू हो। क्लियर? दिस इज प्रोसेस ऑफ word processors, mainly used to change the layout, the page style, means जो पेज का बैकग्राउंड है, पेज का लेआउट है, वो भी हमारा वर्ड में ही आएगा। मतलब हमारा अलाइनमेंट है, हम अपने वर्ड को स्टाइल चेंज करना है, उसे सेव करना है, एडिट करना है और अपना डॉक्यूमेंट प्रिंटेबल बनाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग वर्ड प्रोसेसर के थ्रू या MS वर्ड के थ्रू उसे कवर करा सकते हैं। क्लियर? In this we will process our document, and in this we have very, or we can say very much tools. A number of tools are available in MS Word. By these tools we can insert, we can type text, we can insert the graphics, हम वीडियोस को और साउंड को भी अटैच कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। और इस करेक्टर के सीक्वेंस को, इस टेक्स्ट के सीक्वेंस को हम अपने कंप्यूटर में सेव रख सकते हैं। ओके, एंड मेक आवर डॉक्यूमेंट or arrange our document in such a way that it will become a printable document, because whatever we will create in MS Word or in Word file, then our main aim to take the print of that particular document. So our document should be printable as well, or we can send this particular document through mail or via any medium. Like nowadays we can send our document via WhatsApp as well. Now here's the question, how can I start MS Word? You can start MS Word simply clicking on the start button. You have to click on the start button, found MS Office there, or simply Office there, click on Office, and as you will click,
the office, a drop down menu will open where there is many applications are there: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, many more. We will select the MS Word from there, and after clicking on MS Word, the MS Word application will pop up on our screen. There are many tools are available in MS Word: home tabs, home menu, insert, page layout, references, mailing, review. And MS Word is used for many works. We can write our research paper, our document, our thesis work by using MS Word. Now, we have many ways to create and save the document in MS Word. As we have know that how to start the MS Word, now we will know how to create a document. First of all, you have to click on the Microsoft Office button, and by clicking on by opening MS Word, you can press Ctrl plus N. Ctrl plus N, this is used for new page. आपके पास कोई भी पेज ओपन होगा, अगर आपको बिल्कुल न्यू फ्रेश पेज चाहिए तो कंट्रोल प्लस एन करिए, या आप फाइल पर क्लिक करिए। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ऑप्शन में ओपन या न्यू का ऑप्शन मिलेगा। न्यू, आप न्यू पर क्लिक करिए तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा आपके टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। नाउ यू कैन स्टार्ट योर टाइपिंग। ओके, so this is all done in this lecture. Today we have learned the basic ideas about MS Word. What is MS Word, what type of work what we can do with this MS Word application. In upcoming videos we will see the basic functions, the using of it, and main features of it. Okay, prepare your good quality notes and be in learning mode always.